As we have completed 4 questions of exercise 2.4 in the previous class, now next 5 questions are remaining of exercise 2.4 of NCERT exemplar. These are the 5 questions which is visible on your screen. Hope it is visible to everyone. Is it visible? Yes, Yes, sir. sir. Yeah. Who is this? Beta mute. You NCERT exemplar exercise 2.4. Okay. Now start solving first this question number 5. Okay. In question number 5, you have to simplify this one. Solution of this fifth one. 2x minus 5y whole cube minus 2x plus 5y, 5y whole cube. We know the formula of a minus b whole cube and a plus b whole cube, right? What is the formula of a minus b whole cube? Yes, anyone? What is the formula of a minus b whole cube? a square minus 2ab plus b square. The cube में a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square. correct. Very good. A cube. So here, if we apply this formula, just a minute. If we apply a minus b whole cube here in 2x minus 5y whole cube, it will be what? 2x whole cube, right? 2x whole cube, that is a cube. Then minus b cube is what? 5y whole cube. Then minus 3a square b. Here a is 2x into b is 5y, right? And then plus 3ab square. Correct? This is clear to everyone? Just I have applied a minus b whole cube while expanding this 2x minus 5y whole cube. Correct? Now there is a minus sign, and then we have 2x plus 5y whole cube. So it will be what? 2x whole cube, that is a plus b whole cube. A cube plus b cube plus 5y cube, right? Then plus 3 into 2x whole square into 5y and plus 3 into 2x into 5y square. Any confusion? Is there any confusion in this step? No, sir. And if you further simplify this one, you'll get, see, it will be 2 to the 4 to the 8, 8x cube minus 5 5 the 25, 25 5 the 125y cube, then minus 2 to the 4, 4 5 the 20, 23 the 60, x square y. Sir, Yes, beta. sir, we cannot cut directly this 2x cube and minus 2x cube. That will be cancelled out in this step. I will cancel that one. Okay. Okay. If you want to cancel directly, you can cancel it. Okay. Then the next step is what? Plus 5 5 is 25, 25 2 is 50, 53 is 150.
xy square. Similarly here also it will be, if we take this minus inside, it will be minus 8x cube minus 125 y cube, correct, minus 60 minus 60 x square y and minus 150 xy square. Hope it is clear to everyone. If anybody have any confusion in this step, just unmute yourself and speak. Is it clear till here? Is it clear till here? Student please respond. Yes, sir. अब यहाँ पे देखो ये 8x क्यूब एंड माइनस 8x क्यूब इज कैंसल आउट, करेक्ट, ये कैंसिल हो जाएगा, this one and this one cancel out, and then this 150 xy square and 150 minus 150 y x square xy square will be cancel out, correct, and then this minus 150 y cube and minus 150 y cube will be added, correct, ये ऐड हो जाएगा, बाकी दोनों सेम साइन वाले हैं तो ये तो ऐड हो जाएंगे, तो माइनस 150 वाई क्यूब एंड सॉरी माइनस 125 वाई क्यूब एंड माइनस 125 वाई क्यूब विल बी व्हाट, 125 plus 125 will be what, 250, it will be minus 250 y cube and minus 60 x square y and minus 60 x square y, it will be how much, minus 60 60 120 x square y. This statement is clear or any confusion is there? This statement is clear to everyone? Yes. This is the final answer. If you want to take out common ले सकते हो, but it's okay, यहाँ तक लिखोगे तो भी you will get the full mark. This is the final answer, 250 y cube minus 120 x cube. If anybody have any confusion, then unmute yourself and speak. Now move to the question number 6. Multiply x square plus 4y square plus z square plus 2xy plus xz minus 2xyz by this minus z plus x minus 2y. Very simple question, you can do by yourself. Just you have to do the multiplication. आपको केवल multiplication ही करना है. You can write this x square plus 4y square plus z square plus 2xy plus xz minus 2yz in one bracket, and in the other bracket it is minus z plus x minus 2y. You can open the bracket one by one. So this x square will be multiplied by this minus z, this 4y square is multiplied by this whole minus z plus x 2y, or you can write this minus z will be multiplied by minus z, then in the bracket this one x square plus 4y square plus z square plus 2xy plus xz minus 2yz, bracket close. Then this plus x is also multiplied by this x square plus 4y square plus z square plus 2xy plus xz minus 2yz, and similarly this minus 2y will be multiplied by the same x square plus 4y square plus z square plus 2xy plus xz minus 2yz. Is it clear till here? यहाँ तक किसी को कोई confusion है तो बोलो. Student, is it clear? Now, students, am I audible or not? Yes, sir. Now, if you multiply, Yes, sir. multiply this one, this first bracket, it will be minus x square z, then minus 4y square z minus z cube, right? Then minus 2xyz plus
no, sorry, minus only, minus xz square and minus minus plus 2yz square. Similarly here, plus x cube plus 4xy square plus xz square plus 2x square y plus x square z and minus 2xy z. Similarly, last, this minus 2x square y minus 2x square y minus 4 to the 8y cube minus 2yz square minus 2 to the 4xy square, right, minus 2xyz and minus minus plus 2 to the 4y square z. Is it clear to everyone or still any confusion is there? Now you are supposed to check which terms will be going to cancel out. जो जो टर्म कैंसिल हो जाएंगे वो आपको लिख देना है. तो आई थिंक ऑलमोस्ट बहुत सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, राइट. इफ यू ऑब्जर्व दिस फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर जेड, यहाँ पे एक्स स्क्वायर जेड है, राइट, दिख रहा है एक्स स्क्वायर जेड, ये एक्स स्क्वायर जेड है कि नहीं? Yes. और माइनस एक्स स्क्वायर जेड हियर, और कोई माइनस एक्स स्क्वायर जेड है? माइनस एक्स स्क्वायर जेड. स्टूडेंट प्लीज म्यूट योरसेल्फ. एक्स स्क्वायर जेड के लास्ट टू सेकंड फर्स्ट में ये रहा एक्स स्क्वायर जेड, तो कैंसिल हो गया ये, करेक्ट. सिमिलरली दिस माइनस 4y स्क्वायर जेड, अब देखो माइनस 4y जेड वाई स्क्वायर जेड और कहीं पे है, आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सब कैंसिल हो जाएगा. अब देखो बताओ मुझे, 4y स्क्वायर जेड Sir, last. Second line last. सेकंड लाइन लास्ट कहाँ भाई? 4y स्क्वायर जेड कहाँ है? हाँ ये रहा, राइट. ये और ये कैंसिल नहीं हो रहा है, एक्स वाई जेड. अभी देखो माइनस एक्स जेड स्क्वायर यहाँ पे है, माइनस एक्स जेड स्क्वायर और कहीं पे होगा, एक्स जेड स्क्वायर ना, एक्स जेड स्क्वायर ये रहा, राइट ना. देन 2yz स्क्वायर, 2yz स्क्वायर यहाँ पे है और 2yz स्क्वायर कहीं पे होगा, ये रहा. ये प्लस में है, ये माइनस में है. फिर ये 4xy स्क्वायर यहाँ पे है, 4xy स्क्वायर एंड आई थिंक 4xy स्क्वायर लास्ट टू थर्ड सेकंड, ये रहा, करेक्ट. इसी तरह से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2x स्क्वायर y और कहीं पे भी होगा, ये रहा. Sir, first. हाँ, अब कुछ कैंसिल नहीं होगा, अब जो बचे हैं वो लिख दो सीरियल वाइज. सी, तो व्हाट विल बी द रिमेनिंग? सबसे पहले हम x वाला टर्म लिखेंगे. तो इज देयर इज एनी x क्यूब? यस, x क्यूब है ना, ये रहा. फिर y क्यूब है कहीं पे, y क्यूब भी होना चाहिए, माइनस 8y क्यूब है ना, माइनस 8y क्यूब माइनस z क्यूब. अब क्या बचा? xyz कितनी बार है? एड इट. ये 2xyz here, 2xyz here and 2xyz here. It will be minus 6xyz. So this is the final answer. Any confusion? Any confusion in this statement? No, sir. Just write it. Then we'll move to the next one. Question number 7. Is it visible on your screen? You have given Yes, sir. a plus b plus c equals to 0. Then prove that a square upon bc plus b square upon
CA plus C square upon AB is equals to 3. So we know the identity. हमको जो identity पता है, कौन सी identity? A cube, B cube, A cube plus B cube plus C cube minus 3ABC. So we know that A cube plus B cube plus C cube minus 3ABC is equals to A plus B plus C in one bracket, and in the another bracket it is A square plus B square plus C square minus AB minus BC minus CA. Correct. But here it is given that A plus B plus C is equals to 0. So therefore this right hand side will be total 0. Therefore this A cube plus B cube plus C cube minus 3ABC will be equals to 0 into this second term, A square plus B square plus C square minus AB minus BC minus CA. Correct. So that means this can be written as A cube plus B cube plus C cube minus 3ABC is equals to 0. This statement is clear to everyone, or any confusion is there? Is it clear? Yes, sir. Now if you take this 3ABC to the other side, it will be A cube plus B cube plus C cube is equals to 3ABC. अब क्या करो, ये ABC से तीनों को डिवाइड कर दो. It will be what? A cube upon ABC plus B cube upon ABC plus C cube upon ABC is equals to 3ABC upon ABC. तो क्या हो जाएगा? दिस 3ABC, ABC कैंसल आउट, हियर CC कैंसल आउट. यहाँ पे पहले टर्म में क्या कैंसल होगा? एक A कैंसल होगा. इट विल बी व्हाट? A स्क्वायर अपॉन BC. सेकंड वन इज B will be cancelled. It will be B square upon AC. And third one C will be cancel out. C square upon AB. And is equals to what? 3. This is what we want to prove. Any confusion in this one? Very simple question. Student, is it clear? Yes, sir. Yes, sir. इसको लिखो फटाफट. देन इसके बाद दो क्वेश्चन और है, वो शायद ही हो पाएगा आज. ये फटाफट लिखो, फिर देखते हैं. This is all for today's class. Only 2 minutes are remaining, so we'll start next question, that is question number 8 and 9 in the next class, and we will start chapter number 3 also, that is coordinate geometry, in the next class.